पानी मतलब पंजाब पहला देश का एक प्रदेश बना जिसके गांव बिक्री पे लग रहे हैं। गांव ने कहा विलेज ऑन सेल, विलेज फॉर सेल, क्योंकि गांव में पानी का संकट इतने भयंकर रूप से बढ़ गया है कि अब खेती करना वहाँ वायबल नहीं रहा। और अगर नहर का पानी है और अब टेल एंड पे है आपका गांव, तो आपको पानी नहीं मिलेगा, फसल सूख जाएगी। और ये शुरू हुआ, उसके कारण कर्जा, उसके कारण बीमारी, बहुत कुछ। तो पहला गांव 2002 की बात है, गांव हरकिशनपुरा, जिला बठिंडा। उस गांव ने कहा कि हम दिवालिया हैं, गांव बिकाऊ है। 2005 में एक और गांव मानसा जिले का मलसिंह वाला, गांव दिवालिया है, गांव बिकाऊ है। पटियाला जिले का गांव मुल्लापुर सुंदरसी 2010 में, ऐसे मैं और कई गांव के नाम बना सकता। तो ये अलग तरह का फिनोमिना था। फिर ध्यान में आया कि वहाँ हरित क्रांति आई तो उसके साथ साथ मशीन आई। शायद मुझे मालूम नहीं IIT वालों का भी कुछ भूमिका है कि नहीं मशीनें देने में, पर लगा मशीनें देना शायद मानते हम विकास है, पर अब पता लगता है 50 साल बाद कि इरिवर्सिबल विनाश हो गया है, वो वापस ही नहीं लाया जा सकता। आपने उसने वो कर दिया है कि अब वापस जाना, अब लोग कहते हैं कि वापस जाएं कैसे, हो ही नहीं सकता। तो आपकी ज़मीन कम्पैक्ट हो गई है। आप शायद नॉर्मल जो पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, आप उससे पानी निकालेंगे तो शायद आप 50 फीट 100 फीट से मैक्सिमम निकाल के होंगे। आज आप 1000 फीट पे पानी निकाल रहे हो, और वो जो 1000 फीट से पानी निकाल रहे हो तो वो प्रीमोर्डियल वाटर है, मतलब वो पानी उतना ही पुराना जितना पुराना पेट्रोल है। तो आप 3rd एक्वेफर 4th एक्वेफर पे पहुंचे हुए हो, और उसके कारण हैवी मेटल्स नीचे के ऊपर आ रहे हैं। और हैवी मेटल अगर पानी ज़मीन के ऊपर आ रहे हैं, आपकी फूड चेन में आ रहे हैं। और पंजाब, अगर आपने कहीं पर ध्यान दिया होगा कि पंजाब की बासमती है तो उसकी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई? कि उसमें हैवी मेटल्स थे। और हैवी मेटल कहाँ से आए हैं? वो ज़मीन के नीचे से आए हैं। तो जो चीज़ 100,000 फीट पे 1200 फीट पे प्रकृति ने रखी हुई है, आप उसको निकाल के ऊपर ला रहे हो। तो बहुत अजीबोगरीब चीज़ें। फिर ध्यान में आया कि क्योंकि ये सब मशीनें बढ़ गई हैं, पानी आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा कर लिया इस्तेमाल, तो गांव के अंदर ज़्यादा कीटनाशकों के प्रयोग के कारण बीमारियां जो फैली। यानी कि मुझे ध्यान है कि आप में से बहुत लोगों ने कैंसर ट्रेन शब्द सुना होगा। तो ये कैंसर ट्रेन शब्द से पहले इस शब्द का प्रयोग मैंने किया था। ये 2004 की बात है। डाउन टू अर्थ मैगजीन CSC ने स्टडी की पंजाब में पेस्टिसाइड और हेल्थ के ऊपर। तो उसमें जब मुझसे पूछा उन्होंने कि क्या आप देखते हो उसको, तो मैंने कहा कि ये जो है ये कैंसर ट्रेन है। डॉक्टर खादर वली जी आ गए हैं, आइए डॉक्टर साहब। आपके मतलब वो क्या होता है, मुख्य नायक से पहले पहले वो जो है विदूषक जैसा कुछ मैं लोगों को बिठा के कोशिश मानने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि उस समय ये जो एक प्रक्रिया हुई पंजाब में, इसने हमें लगा कि ये संकट ना खेती का संकट है, ये ना पर्यावरण का संकट है, ये सभ्यता का संकट है। हम जब इसको हम टुकड़ा टुकड़ा देखते हैं कि ये एग्रेरियन क्राइसिस है, एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, ये एनवायरमेंटल क्राइसिस है, ये हेल्थ क्राइसिस है, हम इसको जब टुकड़ा टुकड़ा फ्रेगमेंटेड करके देखते हैं तो ध्यान में आता है हम गलत जगह देखते हैं। वो हाथी की पूंछ सूंड टांग वाला मामला हो जाता है। ये सभ्यता का संकट है। और इसीलिए 2006 में मैंने पहली बार कहा था, उसका विरोध भी हुआ, मुझसे लोगों ने झगड़ा भी किया। तो मैंने कहा था अब इज अ डाइंग सिविलाइजेशन, क्योंकि अगर पानी आपका जहरीला हो जाए या ख़त्म हो जाए तो सभ्यता का अंत वाली बात होती है। आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को लाने की जो पूरा सिस्टम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो अगर कोलैप्स हो जाए, एक ही वानगी दूंगा कि 120 मिलियन एवरेज वाला स्पर्म काउंट अगर 20 मिलियन पे रह जाए, उसका मतलब कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है। और डाइवर्सिटी आपके भोजन की सारी हालत ये हो गई कि आप पूरे देश को गेहूं देते हैं, लेकिन पंजाब में जगह जगह आपको दुकानें मिलेंगी जहां बोर्ड लगे आटे की चक्की पे यहाँ मध्य प्रदेश का गेहूं मिलता है। तो आप पंजाब में गेहूं उगा रहे हो तो पंजाब के लोग पंजाब का गेहूं खाने को तैयार नहीं है। एक और बात, जो अच्छे परिवार हैं आप उनके पास जाओ
और विजय जी वो आपको परोसेंगे रात को, अगर बासमती, खादर वली जी की सुन के तो खैर बासमती नहीं खाएगा, पर अगर जो बासमती खाएगा तो क्या कहता है, गेहूं अपना नहीं खाना चाहते, ये क्या किस दिशा में सारा मामला चला गया। और फिर आपने कहा वो ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर आपने कहा वो सस्टेनेबिलिटी है, अगर जब क्या उसको उन्होंने कहा सस्टेनेबिलिटी नहीं प्रॉस्पेरिटी कहा, तो वो काय की प्रॉस्पेरिटी है। वो पंजाबी में गीत है, आई जवानी रोड खोड़ जानी जो हड़दा पानी, वो एक बाढ़ के जो कुछ था वो भी वो बहा के ले गई। और ये जो हरित क्रांति लेके गई है, ये खाली स्वास्थ्य का विनाश नहीं किया, ये हमारे उत्सव ले गई, हमारी उत्सव परता ले गई, गांव के अंदर का जीवन ले गई, गांव की जीवंतता ले गई और हमारे लोगों को जड़ों से उखाड़ गई। तो एक व्यापक सांस्कृतिक विनाश है। तो मुझे लगता है उस सांस्कृतिक विनाश और सांस्कृतिक जो सभ्यता का संकट है, उसमें भोजन और आहार ये केंद्र है। खादर वली जी के साथ मिलके 2008 में DDS डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद के साथ मिलके हमने किया था, लगातार काम कर रहे हैं। गत 4 वर्षों से खादर वली जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। आज पंजाब में सैकड़ों किसान मिलेट उगा रहे हैं, लगभग 100 टन मिलेट डॉक्टर साहब हर महीने पंजाब में आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है। हम अपने किसानों को तैयार करें उगाने के लिए। पर अभी क्या है ना, पिछले 50 साल में उनको हरित क्रांति ने इतनी आदत बिगाड़ दी है, हमने कहा मिलेट उगाओ, तो किसान मिलेट का बीज ले गया, फिर फ़ोन मुझे करता है, अच्छा महेंद्र जी इसको यूरिया कितना डालना है। मैंने कहा यार इसको यूरिया नहीं डालना भाई, ये क्यों डालना, नहीं नहीं थोड़ा सा मैं आधी बोल तो डाल ही देता हूँ। भैया नहीं डालना भाई, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हो जाएगा उसके बिना, हाँ हो जाएगा। अच्छा अगर कीड़ा आ गया, अरे भाई कीड़ा नहीं आएगा, नहीं नहीं अगर वो आ गया तो ये नहीं, वो ऐसा है ना 40-50 साल में दिमाग में भर दिया वो कि उसके बिना हो ही नहीं सकता, तो बहुत कठिन है। और फिर आखिरी चुटकुला इसमें होता है पानी, मिलेट को पानी नहीं चाहिए, अब पंजाब वालों को आ जाता है पानी भर देना। तो हमारे बहुत किसानों की फसल पंजाब में मिलेट की इसलिए खराब हो जाती है, उनको बीमारी है ज़्यादा पानी देने की, वो दे देते हैं वो। तो हमने कहा क्यों दिया इतना पानी, नहीं 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 यार हमने तो कम ही दिया था, पर वो तो ये पड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ा, मुझे मालूम है कितना बड़ा वो संघर्ष है, एक पूरे का पूरा वो त्रिशंकु वाला मामला है, वो मतलब हवा में लोगों को लटकाने वाली बात है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। मुझे लगता है इसमें उन्नत भारत अभियान का, IIT जैसे संस्थान का बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। मैं एक निवेदन करूंगा, आपके जो नौजवान साथी कर रहे हों, उनमें से कुछ लोग, इस देश ने पहले हरित क्रांति का बहुत गुणगान कर लिया है, अब सत्य बोलने का समय है। तो उस समय कुछ लोग बोल के प्रोफेसर बन गए, UGC से पोस्ट डॉक्टरेट फेलो ले ली, ठीक है ना, वो शायद मैं नहीं कहूँगा कि वो झूठ बोला क्या बोला, वो जो था। अब समय का सत्य बदल गया है, अब कुछ नौजवानों की दरकार है हरित क्रांति के पूरे देश को ही वैसे तो, पर खास तौर पे पंजाब और हरियाणा को। कुछ ऐसे नौजवान IIT से आए जो वहाँ अपने आप को खपाएं और हरित क्रांति के कारण जो सभ्यता का विनाश हुआ है, हम उससे कुछ आगे का रास्ता निकले। धन्यवाद। जबरदस्त के लिए सभी खड़े हो गए, खादर वली साहब के लिए और दत्त साहब के लिए सभी खड़े हो गए। ये पहले वाली क्लैपिंग शायद गेहूं की क्लैपिंग थी, अभी मिलेट वाली क्लैपिंग है। ये मिलेट की है, मिलेट की ये वाली, अच्छा ये आपकी मिलेट की, अच्छा जी जी जी। धन्यवाद उमेंद्र जी। और पिछले कुछ वहाँ से हम लोग खेती विरासत मिशन और उन्नत भारत अभियान एक सिनर्जी की बात के ऊपर प्रयास कर रहा है और निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। मैं दिनेश जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, तो हमारी मंच की जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी होगी। क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है सर, सर का लगा हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं खादर वली जी को सुनने के लिए। अब मैं किसी औपचारिकता के बिना प्रोफेसर VK विजय जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उन्नत भारत अभियान के और प्रोफेसर हैं CRDT IIT दिल्ली में, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो सभी वक्ताओं का स्वागत करें। सभी हमारे जो आज
इस कार्यक्रम को सभी लोग अटेंड कर रहे हैं, उनका सभी का स्वागत करें। धन्यवाद। आज इतवार के दिन दोपहर के बाद जब जनरली आपको बाहर जाने का समय है, सोने का समय है, उस दिन हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये दिखाता है कि हम किसी कार्य के प्रति तत्पर हैं, और क्योंकि आप सब लोग यहाँ आज इस कार्यक्रम के भागीदार बन रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों का हृदय से उन्नत भारत अभियान की तरफ से, समाधान की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो आज हमारे बीच में कार्यक्रम शुरू होने से पहले उमेंद्र जी और समाधान से समय का हमने उपयोग किया कि 2-2 मिनट उन्होंने अपनी बात कही, और वो वास्तव में ज़रूरी बात है जिसको हमको समझना पड़ेगा कि हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए कौन सा रिवोल्यूशन कर दिया, संस्कृति ही बदल दी। साथ में हमारे साथ दिनेश जी हैं जो ONGC में CSR का काम देख रहे हैं, और पूरे देश में इस तरह के प्रोजेक्ट वो दे रहे हैं CSR के माध्यम से, जिसमें वास्तव में हमारे देश की संस्कृति, हमारा समाधान, हमारा फिलोसॉफी उसमें आगे बढ़े। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर खादर वली, आप बेसिकली रहने वाले तो आंध्र प्रदेश के हैं, पर आंध्र प्रदेश के बाद में स्कूल की पढ़ाई के बाद में आपने कर्नाटका में शिफ्ट किया, IIT बेंगलोर से PhD किया, और IIT बेंगलोर से PhD करने के बाद में आप पोस्ट डॉक करने ही वर्कड ऑन डीएक्टिवेटिंग हाईली टॉक्सिक केमिकल्स लाइक एजेंट ऑरेंज टॉक्सिन्स एट्सेट्रा, एंड ही ट्राई टू डेवलप दैट हाउ दीज मटेरियल्स कैन बी डेवलप्ड। और उसके बाद में वो भारत वापस आ गए, CFTRI मैसूर में कुछ समय के लिए काम किया, पर वो भाया नहीं। जिस तरह के डेवलपमेंट थे, जिस तरह के काम थे, वो इनको रास नहीं आए, और वापस लौट के कि मेरा जो जीवन का उद्देश्य है, मेरी जो जिस तरह की सोच है, मुझे उस तरह का काम करना चाहिए। और 1997 के बाद वापस आके मैसूर में आपने अपना आवास बनाया और वहीं रह रहे हैं। और तब से देश में किस तरह से जो 5 मिलेट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, छोटे मिलेट्स जिसको कि श्री धान्य हम कहते हैं, और इन श्री धान्य में जो 5 मिलेट्स हैं, स्मॉल मिलेट्स, फॉक्सटेल, बर्नयार्ड, कोडो, लिटिल एंड ब्राउन टॉप, इन सब को मिला के जो 5 नवधान्य हम कहेंगे या स्मॉल मिलेट कहेंगे, श्री धान्य का नाम उन्होंने दिया है। और साथ में श्री धान्य को बढ़ाने के साथ साथ आप होम्योपैथी की भी प्रैक्टिस करते हैं, और होम्योपैथी के माध्यम से और आहार क्रांति के माध्यम से आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक अलग से आहार से आरोग्य के विषय में बताने का संदेश देते हैं। और बहुत सारे हजारों पेशेंट को इन्होंने ठीक किया कि किस तरह से आप आहार के माध्यम से ही चीज़ें को ठीक कर सकते हैं। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट द प्राइमरी काज ऑफ न्यूमरस वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसका ही ये दुष्प्रभाव है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, और खादर वाली जी हमको बताएंगे कि किस तरह से हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और देश में जो वास्तव में अभी पिछले 100 साल का जो डेवलपमेंट है, वो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, वो इंडियन सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट नहीं रहा। ईस्टर्न मॉडल अलग था डेवलपमेंट में, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम बात करते थे, हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। अब क्या बात कर रहे हैं, अपना खुद का हो जाए बस, न उसके आगे का, न परिवार का, न समाज का, न देश का कुछ होना चाहिए, और खुद का स्वार्थ के आगे हम सब चीज़ भूल जाते हैं। तो उससे बढ़ के हमको जो भारत की फिलोसॉफी है उस पर आना पड़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी दिशा में ये जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें आज हम लोग विश्वास रखते हैं कि खादर वली जी से हमको जानने को मिलेगा कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है और रोल ऑफ मिलेट्स इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम, इनको हमको आहार से आरोग्य
में किस दिशा में बढ़ें। अभी करीब 10 दिन पहले ही मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ में था, और वो आजकल WHO के चेयरमैन भी हैं। WHO के चेयरमैन होने के नाते, जब पहले भी वो किसी पोजीशन पे थे WHO में, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, और तो चेयरमैन होने के नाते अब उनके पास महती जिम्मेदारी है पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की दिशा देने के लिए। और जब पूरी दुनिया का स्वास्थ्य की दिशा देनी है तो WHO ने एक मॉडल बनाया था कि सन 2000 तक हम पूरे दुनिया को स्वास्थ्य की दिशा देंगे, और सब लोग, मतलब कोई भी बीमार नहीं रहेगा, और सबको मॉडल मिलेगा कि हाँ स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखा जाए। पर वो मॉडल फेल हो गया। तो अभी ये नया मॉडल की जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इंटीग्रेटिव हेल्थ सिस्टम, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आयुर्वेद भी होगा, होम्योपैथ भी होगा, आहार क्रांति भी होगी, और इन सब को लेते हुए किस तरह से योगा भी होगा, प्राणायाम भी होगा, इन सब को लेते हुए वो नया डायरेक्शन बना रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट बना पा रहे हैं WHO का। अपनी चेयरमैनशिप के टेन्योर में ही वो कह रहा कि मैं इसको लॉन्च करने की कोशिश करूँगा, और वो उसमें जापान का भी कंटेक्स्ट आ रहा है, चाइना का भी आ रहा है, इंडिया का भी आ रहा है, दूसरे जिन्होंने कई, हमने पूरी दुनिया का जो सिस्टम है उसको इकट्ठा करके किस तरह से पूरा दुनिया बिना बहुत ज़्यादा खर्च किए हुए, बिना इंश्योरेंस के, अपने हेल्थ सिस्टम को अपने आप ठीक कर सके, इस पे वो काम कर रहे हैं। और उसमें मुझे लगता है कि जो ये वाला इशू है, मिलेट से, आहार से आरोग्य, ये एक बहुत प्रोमिनेंट, उन्होंने कहा कि देखिए विजय जी, जो हम खाते हैं उससे यूनिवर्सिटी में बना फैकल्टी, तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मेरे को एक किसी गांव में बायोगैस की ट्रेनिंग देता था, तो गांव में जाके वहीं बायोगैस प्लांट बनवाने होते थे, तो 7 दिन वहीं रहना पड़ता था गांव में। तो एक सुदूर गांव में मेरा प्रोग्राम हुआ, तो उसमें जिस घर में मैं गांव में रुका, वो मुश्किल से 20-25 घर थे उस गांव में। उस गांव वाले ने, वो कोई बाहर से साहब आए हुए हैं और आज यहीं रुकने वाले हैं, तो खाना बनाया। तो खाने में बाजरे की रोटी और छाछ, और बड़ी प्यार से उन्होंने घी भी डाल के और उसको बाजरे की रोटी को बनाया, और आँच, वो चूल्हे की लकड़ी की आँच पे सेकते हैं, और छाछ। तो दोपहर में, आज से दोपहर बाद आप काम नहीं करना, आप आराम से ये खाइए और फिर आराम करिए, काम तो होता रहेगा। तो मैं पूरी अपने जीवन में भूल नहीं सकता उस वाक्य को, कि उन्होंने मुझे, जनरली हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो 3-4 रोटी खा लेते होंगे, 2 बाजरे की रोटी खिलाई उन्होंने, छाछ में 1-1.5 लोटा छाछ का पिया, और उससे बाजरे की, तो और एक खाट पे उन्होंने पॉल के अंदर में खाट बिछा दी और आप लेट जाइए यहाँ पे। मुझे ध्यान है कि मुझे इतना गहरा नींद आया, मतलब ऐसी नींद आई कि आपने बहुत कुछ, जैसे अल्कोहल लोग पीते हैं और उसका नशा आता है, इतना जोरदार, नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं, इतना जोरदार नशा आया, उसका एहसास मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे आज उस घटना को कम से कम 30-35-40 साल हो गए होंगे, पर मुझे वो घटना हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी कि वो जो नशा मैंने महसूस किया। मैं नॉन अल्कोहलिक हूँ, फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि लोग नशा आता तो क्या सोचते होंगे। इतना ज़ोरदार नशा आया 2 बाजरे की रोटी और छाछ के साथ, मतलब मिलेट का कितना प्रभाव हो सकता है ये हम समझ सकते हैं। Good afternoon, everyone. I am from Mysuru, Karnataka. The models they're all wrong, absolutely wrong. These centralized systems for health, this concept of WHO is absolutely wrong. हेल्थ बनता है हमारा किचन में,
WHO cannot come and cook in our kitchen, and they cannot decide rules what to do, what not to do. WHO is doing what it is doing because they want to control. They do not want us to lead our life. All the governments are actually puppets in this factory food culture. Nahi to, you just think of this, that there were zillions of diverse food patterns, food materials, food systems on this planet just 300 years ago. I'm not talking about 3,000 or 5,000 or 10,000 years. Just three, including Chhattisgarh tribals are eating this stupid maida, pulka and paratha. And the so-called nutritionists are talking that this is problem, that is problem. How can human beings living on different zones, different geographical conditions, and the local food patterns are so different, and here we are in the name of science, in the name of whatever you call, trying to centralize, systematize and find a uniformity. How on earth this can be scientific? These are the basic questions we still are not asking. Just because Harshavardhan became WHO chairman doesn't mean that he has got right to have integrated medicine, integrated way of, there is nothing like integration. You cannot integrate Chhattisgarh tribals with Hamara Bili Ranganbetta tribals. They are different, these guys are different. What grows here is different, what grows there is different. In the name of science, in the name of providing secured food, in the name of doing all this hangama, there is no security for food. There was no insecurity. It is the centralized systems create this insecurity. So these are basic differences. Intellectually I have with all the people. So you need to decentralize, you need to get to locals, local foods. But it so happens that millets are both local and universal at the same time. And that's how it becomes a solution for all on this planet. Because they can mitigate various issues that we have created in the name of science, in the name of factory food culture, which is basically an economic model. And instead of saying what it is, we are trying to paint in different technicalities. First place, the choice of rice and wheat happened for a particular reason. They are C3 foods. When you give water, you can increase the yield. That's the only reason why they chose these two grains, nothing else. Because they can control. In the name of giving water, they corporatized mining, they corporatized dam building, they corporatized machines, and saying so, they said we are having green revolution. In fact, it is the war revolution. It is the material left out in the war, they converted into fertilizer. So to sell the left out war material, they called green revolution. This is the history of green revolution, and if you have any doubts, rather if you don't agree with me, I have no place to go and say that it is so. This is the real fact. And of course,
Then they built their regime of fertilizers which took over. Then came pesticides because you have monoculture, be it rice, be it wheat, be it sugarcane. There was no need for human race to grow sugarcane because it doesn't grow that easily. It used to grow wherever, rainforest, where there is lot of water conglomeration and things like that. But now we have 28% of the agriculture land on this planet dedicated to sugar estates. And we call this science. And we call this agricultural departments. And then call environment is degrading. What the hell are we talking? You intentionally destroy the forest and grow something which guzzles water, to produce 1 kilo sugar cane or sugar from the sugar cane, you need to spend 28,000 liters of potable water. You do not know why you are producing sugar. The so-called biochemists of the world should have told this long before, that sugar is the penultimate product that we pump into our bloodstream when the digestion is completed. That means sugar, if you eat, within no time floods your blood with glucose. Lo and behold, you need to have only 5 grams of glucose at any given point of time to call yourself homeostasis. And here we are, in the name of science, in the name of development, in the name of biochemistry, in the name of physiology, allowed sugar. India alone is producing 42 lakh tons. I think I am not right. This is 5 years back data. And Florida and California have evaporated their water just to produce sugar. And I cannot remind you the mayhem the Britishers and the French and the so-called Portugal created in African countries in the name of sugar estate. And sugar is the last thing that you want to put in your mouth, because it is the penultimate product. Within one hydrolytic step, it gives you glucose and you are flooding your blood. And you say you take a cup of coffee, a 100-gram donut, you are flooding your blood, and the blood loses its homeostasis because it cannot deal with the excess sugar that you are sending into your bloodstream like flood. You only have to have 5 grams, and to dissolve 5 grams into carbon dioxide, you need to walk 1.5 hours. And you pump into your bloodstream when you eat a donut, or when you take a cup of coffee, or when you drink a cup of Pepsi or Coke. 45 grams of sugar is pumped in. And you think you can be healthy? And it is not any different when you eat rice and wheat. Within 20 minutes, you flood your blood with glucose, because there is no process, no mechanism to hold back the glucose that you are putting in your mouth, because there is no fiber in these 2 grains, zero. For namesake, you have 1.2 grams in wheat, 0.2 grams in your rice. Bhumender Sab was mentioning basmati rice, black rice, red rice, brown rice, whatever rice you name it. It's only 0.2 grams of fiber. And it is this fiber that God has made to control the release of blood glucose into your streams. No one questioned when they said green revolution and we are creating secured food systems. But we have laid down glucose imbalance in the name of green revolution.
Is there any science in this? Why didn't all the scientists question even once? Because the excess glucose is invitation for pathogenic bacteria to flood your system. If there is any immunologist, he would agree a milligram of sugar is good enough to spoil your immunity. So when we know this much, how come all the scientists, all the biochemists, all the nutritionists, nutritionists are talking about vitamin B12 and vitamin D. They are not bothered about the glucose flooding. And it is this excess glucose in the blood sucking out all the water from each and every living cell in our body, creates the havoc, triggers emergency metabolism, the liver, the pancreas, the adrenaline. Everything is in an emergency mode, trying to get rid of this glucose into different products, be it cholesterol, be it triglycerides, be it aromatic factor, be it glycogen, be it fat, be it meat. Huge amount of emergency actions taken by whole system, forgetting what they are supposed to do in a slow and steady fashion. So in the name of science, in the name of green revolution, we have created havoc in our homeostasis, and no doctor is talking about it. That's how you have 38% of obesity, because the excess glucose has to be dealt somehow, so they become pregnant for lifetime. That's not enough. We have white revolution, developing milk for mothers who cannot feed. They took one of our cows, and then our cows became A2. Our cows are giving 1 or 2 liters of milk, maybe here and there in north 1 or 2 varieties of Gir were giving 4 or 5 liters because they were huge in size, and it's a different. But in general, no cow gives more than 2 liters when it gives birth. And out of the 2 liters, poor calf has to drink at least 1.5 liter, and the remaining we used to collect traditionally, and that was not enough, because if there are 100 cows in a village, 10 or 15 used to give birth to calves. So overall the village ml left from each cow. So maybe 2 liters, 3 liters per year. So क्या बनता है ये 2 लीटर 2 लीटर दूध से? Even without adding curds, they used to get curdled, because the calf used to go and drink and the bacteria used to be there. Some of it happens to be lactobacillus, it used to get curdled, and then we say okay, we will make some curds and then we will make some chas. We end up with question. No gynecologist has any problem with this. Started becoming unnatural. Caesarean births are now 72%. See how damagingly we are working with the so-called science, and we all things are accepted as science. I don't see a single iota of scientific attitude or knowledge in these actions of human race for the last 50-60 years. As if it is not enough, pink revolution is coming. Soybean genetically modified, sweet corn genetically modified, banana genetically modified,
will provide you the raw materials of carbohydrate, fat material and protein material. Now we have artificial intelligence, apps, any name, you name it pig, you name it cow, you name it horse, you name it Aishwarya Rai, you name it Dr. Khadar, no problem. We will make it how much? Any number of tonnage, no issues. Zomato, Swiggy will be passed. At least you need address for Zomato fellows to deliver. Now you don't need address, we have drones, you have your smartphone, you can keep going around, we will trace you, track you and come and feed, push the McDonald into your mouth, and that is for your pink revolution. And we are very happy. Why to cook? And that's what has happened in the north hemisphere. No kitchen. I am happy still I am seeing 3-bedroom house and kitchen, 3 BHK is available. All these real estate fellows are still having that K. In another 5 years that K will be gone. What am I talking here? There is no science. We are the ones who have the problem in our minds that this is science. Harvard, medical, oh, all big names. But why not even one doctor questioned these things? Why? Why no one is asking these questions which are very relevant? We are making uniform decisions. Everyone should have this much protein, this much this much this. Why everyone should have the same protein? Absolute nonsense. Absolute nonsense. We are not able to express this because in the name of WHO, in the name of UN, in the name of this finance, everything is economics. No science, and all these so-called scientists think they are doing science. I am sorry. I am very sorry. I may be the only one who is talking like that, and I don't mind it. So let's talk some real science. So in the name of green revolution, you have created glucose imbalance. In the name of white revolution, you have created hormonal imbalance. In the name of pink revolution, you have evaporated all the microbes that do the best job for you in your gut, microbial imbalance. And it is these microbes along with your living cells that does the real job of taking care of your systems, replenishing, regenerating, re-establishing, reliving. The damaged living cells have to be replenished, new things have to be made. For your kind information, every 3 months your blood cells have to be replenished. Every 3 weeks your skin veins off. You don't know that it is a new skin after 3 weeks. And the largest amount of time taken in our body is there are 2 living cells. One is neurons, another is nephron. Takes 7 years to get replenished. And your digestive canal switches off the enzymes to digest milk when you are around 2 to 3 years of age. That's when your mother's milk dries up in her breasts. That means after that you are not supposed to drink milk. Imagine the same lady gives birth to another baby after 2 years. The first baby does not drink the milk of the second baby's, the same mother. And how on earth we think we can bring some cold, homogenized milk that was stored for 15-20 days, put it in a plastic bottle
attach a plastic nipple and put it in your baby's mouth and think that you are going to be okay? That's how I am seeing a 3-year-old girl menstruating in my clinic last week. And no one has any problem with this. We are not asking any questions. And you think you are going to be healthy? You have MRI, you have PET scan, you have this scan, you have that scan. Yeah, all these scans were used on Steve Jobs. 800 doctors were running all around him, on him, under him, below him, everywhere. They couldn't give him a night's sleep. He was put on morphine patches. And that is science for you. That is multi-speciality hospitals can do for you. You have lost your health in your kitchen. You are searching it for in the hospitals. And we think we are all very intelligent people. And we have here economic model eliminating kids. This is the problem with WHO, this is the problem with UN, and this is the problem with all the governments in the world, having no questions asked, making policies. Because in 1954 Indian Parliament makes Wonder Drug Act. What was the reason to make a Wonder Drug Act in 1954? We didn't even know the name of diabetes. But then here is a law promulgated saying if someone tells they have curing diabetes, he should be put in jail. That means they have sat in the boardrooms and planned to unleash this glucose imbalance in the country, decade by decade. The diabetic content, the diabetic patients increase. Now, just 1 week back we had a aggregation of 4,000 teachers near Ballari. I went to address a session. And I, just for fun, took statistics. 49 patients out of 100 were diabetic or BP patients. 46. And the remaining 54 had one or the other disease. We did 400 samples. Not even one. And who are these? These are so-called teachers, teaching 9th, 10th, 11th, 12th. Not even one is left. And here we are talking about health system, this system, that system. Where is health? It's all evaporated because we have chosen the wrong foods. These are not the foods that the human race should consume. You should be able to create homeostasis when you eat something. That means the glucose has to be released slowly and steadily. Even if it is released, it should be tagged with something that does not allow the systems to get imbalanced. And that is fiber. And that fiber is connected to these 5 grains. In fact, that's how I came back from America to search for grains that have fiber content enough such that it releases glucose slowly and steadily. But then in between this so-called no carbs, high protein, high fat, they are all secondary metabolites in our body. So you cannot forget the hydrolytic enzymes are the maximum in our system, genetic system itself. So it is not the no carbs, it is not the low carbs, it is the slow carb.
and it is the slow and steady release of the carbohydrates into your system, that is glucose, does the job of balancing and homeostasis. So it is the interloculated fiber that is present in these 5 grains. And many people call me millet magic, magic of millets. No, this is not magic of millets, this is science of millets. Because we have been able to help so-called incurable diseases, be it gangrene, be it diabetes, be it BP, be it thyroid, be it a cancer, be it HIV, be it corona, be it corona 19, be it corona 99, I don't care. Follow the science, release the glucose slowly and steadily, find the balance. That balance helps the gut microbes to flourish. The pathogenic bacteria run away when there is no free glucose left. Because our system, the living cells, know to get the glucose when they want, because there are different things arranged by God. Those things fall in place. When you have excess glucose, everything gets receded, and our endocrine system, liver, spleen, pancreas, everything is in a disturbed emergency mode. You see how beautifully we are creating imbalance by choice of the food that we have made in the name of science, in the name of green revolution, in the name of what not. So I just did a simple experiment. Take 20 diabetic patients whose HbA1c was 8, 10, 12. Feed them with these 12 grains. We have actually tabulated in my small booklet. In fact, there is a big misinformation spread. There are 9 millets right now present in the world. There are many more, but these 9 millets are still available. Of course, there are only 3 or 4 available. After I came into picture in 1997, I searched for these 5 grains, and here earlier we used to call them Navadhanya, that is Kodo, Foxtail, Brown Top, Barnyard, Little, Finger, Proso, Jowar, that is Great Millet, and one more is Pearl Millet. And corn people are adding. Actually, corn is not a millet, it's a different cereal. So you add that also, because it is also present in our earlier olden day, not only in India, in fact in American continent it is corn, bean and pumpkin is the original Red Indians food materials. Corn, bean, pumpkin, hundreds of years. They used to grow the same place. The corn stalk comes up, the bean up, and the mulching of the land used to take place with the pumpkin leaves. So there was a complete sustainable system built in agriculture, wonderful model. No soil is lost, no nitrogenous extra product is required because of the lentil, and the aroma, the flavonoids and the terpenoids that the corn leaf produces used to protect from various different insects and other things. So that is destroyed. And in India for the thousands of years, the first domesticated grass, C4 grasses, which do not require water to increase the yield. Oxaloacetic acid onwards, the glucose is built up. There is no need for water. Even if you give water, the yields do not increase. But now the so-called scientists are willing to change the genetic map to increase the yield. This genetic modification is to take the rights of the farmers into their hands. That's as simple as that. And in fact, the increased yields in the experiments that they show is not really true, because half of it falls off once or twice you grow this
so-called genetically modified organic materials, organisms. So the yields are really on the paper actually, because we have done the work. Year by year the yields continue to dwindle. In fact, now last 25 years the wheat production has come down 32% all over the world. So in another 20 years you will have almost no use of growing wheat, and you have to continue to put the same amount of inputs. You see the irrelevancy of these so-called genetic modifications, because they are not permanent, they are not stable. Maybe 10 years, 15 years. You have to keep coming up with different strains, different things. Enormous amount of so-called scientists in focus. And you have this patent culture created by this Western economic model to keep the real natural things away from the farming community. And you become laborers for these corporate companies. And that's what has happened all over the world in the name of agricultural science and agricultural universities, because it is the means of selling their fertilizers and pesticides. Just like the medical community keeps selling the tablets. Does the tablet bring you back the health? Why can't we ask these questions? No professor, no biochemist is asking these questions. Have we got back our health? Can I live without medicine? Have I the right to live without medicine? Yes, our constitution says so, but it is only in the constitution. I am asking constitutional questions. It's not science. So don't talk science, don't talk economics, don't. This life is whole. Don't compartmentalize your thinking. In fact, the result of that is, in Bangalore every day we have a dead body in apartments, no one to ask question, because still it releases foul smell, no one cares. This is the apex result of this fundamental dividing our mind and thinking. This is a social disaster. This is existential crisis. It's not agricultural crisis, it is not environmental crisis. It is all bogus techniques and technical terms that we are using in the name of intellectual. Shall I go one step further and say intellectual diseases? We can have some question answer session. Yeah, I am end my. I think is this too strong for you people to listen this? You better listen. We have found solutions. We have found solutions for all these crises. It's not health crisis, it's not for health. Millets are not for health. Millets are not for environmental disasters. Millets are for holistic living, sustainable, healthy, sovereign, secure. All the words that you want to put. Because this can be grown anywhere on this planet. In Sharjah, in Agumbe. You know what is Agumbe? Forest in Singapore. What's the problem with that place? It rains heavily, 365 days. Even there you can grow. That means these wonderful millets have the broad range from a disaster barren land area to complete rainy systems. In fact, in our that Agumbe area there is a place called Samatadka.
Sama means in our language, in Kannada it is called little millet. And in that rainy mountainous areas, our ancestors have dug trenches, just they look like a bamboo tadka. Tadka means a big sheet of crisscross. So the whole area is dug with trenches interconnected, and the water is drained. In that hilltops, Sama is grown, and the whole place is known as Sam Tadka. And all our wonderful recipes are from that little millet. And now what's the advantage of growing these wonderful millets? You don't need to worry. You can grow anywhere and any time, any place. No need for irrigation, no need for fertilizers, no need for water, nothing. No need to work also. If you can actually sprinkle the seeds in much more thick, not even herbicides are good. There is no herb problem because these things grow like herbs. They take over. In fact, one of the millets is called paniculatum. Its name is, it creates panic, takes over, and gives you yield of 8 to 10 quintals, and if you manage well, you can grow up to 12 quintals in an acre. And we have 90 acres unattended. That means all the 90 acres is source for our food. So what I am trying to communicate to you is that food can be free. Food can be free for everyone on this planet. You can be, so this word sustainable, secured, all these are just created terms, because food actually is free only if your food is millets. No, आप नहीं चाहते, you want to eat paratha, knowing very well that it is rid with gluten, which is causing disturbance in your celiac absorbing capacities, because you like puri. This is the problem with all of us. We are stuck with our habits. We are addicted to sugar, addicted to rice, addicted to गेहूं. ओ वो गेहूं नहीं, ये गेहूं अच्छा है, ये गेहूं नहीं, वो गेहूं अच्छा है. क्या गेहूं है? गेहूं सही नहीं है, बस. So you get a food that releases glucose slowly and steadily, and the lignans present in this fiber has the best PMF, proton motive force. Disease is only name. Everything is EMF versus PMF. Electron motive force is the negative stuff that creates inflammation, infection, you name it. Different organs, different names, pancreatitis, you can go on naming any names, but everything is connected to the electronegative force that is created by our own biochemical reactions. The end result of the most toxic product generation is carbon dioxide. When you burn glucose with oxygen, you generate carbon dioxide, the toxic, most toxic material that has to be released immediately from your system, otherwise you will die. 3 minutes if I press your nose, you are dead. That means beautiful reaction of creating ATP for our biological energy requirements also generates carbon dioxide, the most toxic poisonous gas. And God has given beautiful mechanism to eliminate it second by second, minute by minute. Each and every cell produces carbon dioxide in its mitochondria, is carried out, and the blood transports into your lungs and you eliminate it. The same way, different EMFs produce different toxic morbid waste in our body, and each and every organ has to be met with the perfect EMF annuling capacity antioxidants, and lignans are the most universal, best antioxidants that you can think of on this planet, and they are available in your millet fiber.
and they are available in this 5 millets fiber, both insoluble and soluble. The soluble fiber just keeps roaming around in the blood and takes care of all this toxic morbid waste day by day, week by week, year by year. Hence, there is no room for disease generation at all in your body if your food is. Tell me, you are not ready to say millets because you are all thinking, what the hell this guy is talking. I have to stop eating rice, wheat, sugar, jalebi, gulab jamun. ये क्या बात कर रहा है? But this is the fact. And that is the reason why we are all falling sick. So you eliminate your glucose imbalance, you eliminate your hormonal imbalance, you eliminate your microbial imbalance. Lo and behold, health will come back just by itself. You don't need to do anything else because you are making the doctor sit in your tummy, that is your gut microbes. As far as I am concerned, it is very simple. That's why I came back. I didn't want to fall sick being in that place where Colorado, they grow tons and tons of brown top millet. In fact, brown top millet is American millet. Foxtail millet is Italian millet. German millet is barnyard millet. Little millet is African millet. Kodo millet is Himalayan millet. Luckily, in South India, we have all the millets in different villages, different parts. So why I am talking about only 5? Because the ratio of fiber to carbohydrate is single digit. You have 8% of fiber in foxtail millet, 12.5% of fiber in brown top millet, 9% in kodo millet, 9.8% in little millet, 10% in barnyard millet. Finger millet has got 3.6, proso millet has got 1.7, pearl millet has got 1.2. But the fiber is associated with the whole carbohydrate, so the release of glucose into your bloodstream is regulated. It is this regulation that brings the homeostasis, that brings the health into your system. So even if you present me a completely disturbed, imbalanced system with gangrene, a diabetic patient, gangrenous legs, we have saved thousands and thousands of patients' legs. If you were to present them to allopathic system, they would keep cutting the finger, then the foot, then the till thigh they will. That's the only solution. That's why they made the act, Wonder Drug Act. So no one can claim that they can cure the. And this is the proof that I am telling you, this is a planned system by Green Revolution, White Revolution, and next Pink Revolution. They are going to get drones, and we claim that very intelligent drones, artificial intelligence, they can do better than you. And that's science for us. We are awestruck. ये क्या बात है? I'll order and drone will come and feed me. Yeah, what a fantastic idea. And I went to America again. Some people called me to give lectures. I landed in Washington on their Independence Day, and there was this procession of young boys and girls below 25 years. They are all born in the age group of 97 to 2000. They all are 25 years below. What are they marching for? It's called Proud Day. They were all LGBTs. You know what it means? Lesbians, gays and bisexuals, transsexuals. They are 33% now in America.
You see how we have changed? You don't need a tsunami, you don't need a asteroid coming and hitting the planet. The human race is going to terminate itself. What I am trying to communicate is that we are running into an unnatural systems by choice. The choices are made by these centralized systems, and that's not scientific. And I told you different millets are named. I mean, these were the base food for these particular areas all over the planet. And I chose these 5 because I had only 7-8 years of time to do the testing on the real scientific testing. We did renal tolerance test. So feed these diabetic patients 100 grams of porridge made out of all these 12 grains. Lo and behold, these 5 grains pass the test. That means you collect the urine of this. This is just one day test. I mean, one day you can figure out. So the urine does not have glucose even after 4 or 5 hours. After feeding the so-called diabetic HbA1c 8-10 people, that means they have no holding capacity, even they were able to retain glucose coming into their urine. Whereas rice, wheat, lo and behold, even a healthy fellow, after 1 hour you see you will have glucose spike coming there. And that is the advantage we have with these 5 grains. Finger millet, proso millet, pearl millet and jowar, great millet came in between. Of course, if you do very systematically, you can actually see the ratio of carbohydrate by fiber decides this. Very simple logic, simple scientific observation. In fact, we put it in the table, the same thing. So that's how we are able to determine that these 5 millets are called positive millets. And the next 5, including corn in that, neutral millet. And of course, rice and wheat are obviously negative millets. As simple as that. So you have serious diseased condition, I would advise you to stick to the first 5 grains, because these neutral millets cannot bring you back to this homeostasis over a period of 6 months to 2 years. All your diseases will be wiped out. ये बाएं हाथ का काम है. It's a left hand business for me. Not for me, for you. For us. For everyone. Because I am the first one to say this, I am saying it's my left hand business. But it is a left hand business for everyone. It's free. And you can grow anywhere. And we have given the seeds to everyone. I went to Nigeria and gave them. I gave them little millet. This is your millet, fellows, you eat. And I went to America. Those fellows are growing tons of brown top millet, but they are so intelligent. It is for not for human consumption, they write. And if they are stupid, we are idiots. We are following them. So we have made all wrong choices in the name of science and development and progress. Be aware. You are not going anywhere. You are going to go to hospitals and multi-speciality hospitals, that too. You are going to have MRIs, PET scans, CT scans and what not, but not health, I guarantee. I don't guarantee. The system will guarantee you. It is just to put it across to you, I am trying to say I guarantee. I don't guarantee anything. I cannot guarantee your health, I cannot guarantee your ill health. It is you, each and every individual
who can guarantee health for himself, health for your family, health for your house, health for your village. Choose right, choose the right food, you will change your life. Thus, I am tempted to use one single sentence: if your food is right, there is no need for medicine, and if your food is wrong, there is no use of medicine. That's why I also now and then tell, this is my last sentence: homeopathy, allopathy, naturopathy, tatopathy, Tirupati, you will become Draupadi. Thank you. Yes. Yeah, please. Thank you, and I don't have any words to say because clapping is something is a kind of ritual, but actually I'm speechless, I'm thoughtless. I really don't understand. I mean, what we had been doing and what we are actually doing. So इसको कहते हैं कि सोते हुए को जगाने का काम डॉक्टर खदर वली जी कर रहे हैं, और शायद हम में से आज जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उनमें से एक या दो भी जग पाएँ तो बड़ी बात होगी. और टेम्पटेशन तो जैसा आपने बोला कि जलेबी और रसगुल्ले सभी के लिए टेम्पटिंग है, लेकिन जो खतरे हैं वो शायद हम लोग आज के बाद से और ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हम सभी लोग शायद इस बात को समझ पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रश्न होंगे. जी जी, आपने कहा ना वो जग पाए, वो जग पाए इनको वैराग्य आ जाता है ना, तो वो कबीर जी की कहानी सब सुनोगी, शमशान वैराग्य, तो शमशान वैराग्य वाला मामला ना हो, इस हॉल में जग के बाहर निकलते निकलते भूल गए. हाँ वो फिर गड़बड़. जी. बहुत सारे लोगों के मन में कुछ प्रश्न होंगे, तो चूँकि हम समय से थोड़ा सा विलम्ब से चल रहे हैं तो 10 मिनट का हम सेशन रख सकते हैं. ठीक है. हम लोगों ने एक एक करके नहीं, बाकी लोगों को भी हम मौका देंगे. माइक था ना शायद. हाँ, आप चलिए, आप प्रारंभ करिए. अपना परिचय भी दे दीजिए जरा साथ में, अपना नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा. मेरा नाम अजय चावला है और मैंने आपकी बेटी का प्रोग्राम भी बॉम्बे में अटेंड करा हुआ 3 दिन के लिए, और उन्नत साहब से भी मैं जुड़ा हूँ. और मिलेट के लिए ये हमारे रमेश आहूजा जी दिल्ली में मिलेट प्रदान करते हैं, और मेरी फैक्ट्री के 100 वर्कर्स को भी मिलेट खिलाया मैंने, और उनको कंपेल करता हूँ दिखाने के लिए. और मैंने खुद अपनी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करी है. 9-6 मेरा वेट होता था, मैंने उसको उल्टा कर दिया 6-9. बहुत बढ़िया. फॉर द लास्ट 3 years every day it is well maintained. और इंग्लिश अच्छी समझ लेता हूँ पर बोल नहीं पाता, इसलिए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. नहीं, खादर वली जी से हिंदी में सवाल करूंगा. मुझे मालूम है खादर वली जी भी हिंदी बोल लेते हैं, मुझे मालूम है. मैंने इनको बहुत सुना हुआ है, घंटों सुना हुआ है इनको ना दिल की बात कहने के लिए हम थोड़ा अंग्रेजी में हाँ नहीं, वो ठीक अच्छी बात है, वो कह पाते हैं, अटक जाते हैं. मेरा सवाल है, अपने सवाल पे ही आ जाता हूँ. जैसे खादर वली जी ने बताया कि मीठे को हम रश कर देते हैं, हमें मीठे की जरूरत नहीं है, तो हनी के बारे में भी आप अपना थोड़ा सा ओपिनियन देंगे. और दूसरा, जैसे अभी साहब ने बताया था कि मैंने बाजरे की रोटी और छाछ ली, तो छाछ भी कहाँ से मिलेगी? छाछ दूध में से मिलना है. तो आपका ओपिनियन इसके ऊपर, छाछ के ऊपर क्या, मतलब छाछ को हम कैसे, दही हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है? और घी या नारियल का तेल, दोनों में से कौन सा उत्तम है? मेरे सवालों में हनी, नारियल का तेल, जी छाछ, जी इसके ऊपर आप दही और छाछ जी. प्लीज. कॉर्डलेस तो नहीं है डॉक्टर साहब? कॉर्डलेस नहीं, ये वाला ले लीजिए. और उनके सवाल ले लीजिए. हाँ मैडम, आप बताइए. आप नहीं नीचे से ये मेरा एक ही सवाल था कि मतलब लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग भी था, मोटिवेटिंग भी था. तो मेरे को ये था कि जैसे मैंने सुना है मिलेट्स को बनाने में बहुत तकलीफ होती है, तो उसको कैसे बनाएं और अपने रोज़
एक और प्रश्न लेंगे फिर या ग्रुप करके डॉक्टर वली का एक बहुत ही प्रोवोकिंग लेक्चर रहा और वास्तव में मैं याद कर रही हूँ कि जो बहुत पहले डेवलपमेंट फोरम IIT दिल्ली में हुआ करती थी, राजेंद्र भाई उसके कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। तो एक प्रश्न आज मेरे मन में ये है कि इतने सालों से हम इन चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे हैं। सोसाइटी फॉर यंग साइंटिस्ट होती थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लेकिन फिर भी समस्याओं से हम लोग जुड़े हुए हैं। एक तो मेरा ये प्रश्न है और मैं चाहूँगी कि वली साहब इसका समाधान प्रस्तुत करें। आज हमारी गवर्नमेंट है, मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन हो सकते हैं, उसके बिना शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएँ। दूसरा मेरे मन में तो एक बहुत ही फंडामेंटल प्रश्न है जो आपने कहा कि एक तरह रसोई डिसअपियर हो रही है, और मुझे रियली इस बात की चिंता है कि जो आज की यंग जनरेशन है, स्पेशली जो हमारी बेटियां हैं, जिस विकास की राह में वो चल रही हैं करके, उनके पास बिल्कुल समय भोजन करने का भी नहीं है, भोजन बनाने का भी बात छोड़ दी। इसीलिए मुझे लगता है कि पूरा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है अपने देश की, उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। यदि हम बनी बनाई रोटी दुकानों पे मिलने लगेंगी और ये सब होने, मतलब आप ताजुब करेंगे कि इडली सांभर पैक होके मिलता है, तो इन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा यदि हम स्वास्थ्य को बचाए रखना चाहते हैं। और दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि ये सभ्यता का प्रश्न है, धर्मपाल जी की पुस्तक को मैं रेफर करना चाहूँगी, भारतीय चितमानस काल। उन्होंने उसमें 2 आर्टिकल जिसमें हैं, मैं चाहूँगी कि आप सब लोग पढ़ें। एक है कि महत्व सही जवाब का है, सही सवाल का है, जो वली साहब ने कहा कि क्या हम ये प्रश्न उठाते हैं। और दूसरा उसमें आर्टिकल है कि सभ्यताओं का नवीनीकरण तो करना ही होता है, तो सभ्यता बदलती है पर उसकी दिशा क्या है, यदि दिशा सही है तो सभ्यताओं में नहीं। तो ये कुछ प्रश्न मन में थे, अपना परिचय भी सबको देंगे। फिर भूल जाएंगे। उनका परिचय परिचय आपका परिचय दे दीजिए ना। परिचय तो विवेक हाँ, विवेक पहले विवेक मैं जी परिचय आए। दे दूँ, प्रोफेसर संतोष हमारे CRDT में या आई विल आंसर फ्रॉम द अदर एंड। ये सभ्यता तो सही नहीं है, ये विकास नाम पे हम बोल रहे हैं हमारा बच्चियों, नहीं उनके पास है वही ना ये कैमरा का है। वो खाली कैमरे के लिए। चलो हमारा भारतीय संप्रदाय वसुधैव कुटुंबम सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये सर्वे जना मतलब है कि हर living thing on this planet, whichever has taken birth, sarve janaha, it's not just human beings. So the birds have died because we are growing rice and wheat. Zillions of birds have vanished from the planet. If only we grow millets, zillions of birds will come back. In fact, I have taken wonderful pictures and put it on the net. Half-inch bird sitting on the stalks of barnyard millet. And we have done this experiment, grand experiment, in Raichuru, where Gangavati, where we have rice fields. One of my followers, right in the middle of thousands of acres of rice fields, 10 acres we have grown foxtail millet. Lo and behold, only in that 10 acres you find the birds. So यही है सभ्यता का बात. So we need to find a way to include everything. It's not our kids. The whole living things on this planet have to find a place in our sabhyata. The sabhyata becomes complete only when we mind the diverse living forms on this planet. So we need to be minimalistic, use the least of the planet's resources, and the bill fits only with millets. And thousands of birds, not thousands, in fact I have counted more than lakh birds in my field, and when they come they fertilize your land. It's not that just coming for no reason. They eat some
and they bless you with their droppings. And lo and behold, I have transformed barren lands in a matter of 3 months by this process. That means millet उगाने का एक ही तरीका है to change the barren lands into fertile lands in a matter of 3 months to 6 months. So ये सब जुड़ा हुआ है. हमको बात करने का समय अभाव है, इसीलिए हम all other aspects of millets included. I told you the answer is this for all the solutions, because it has spanned its wings, and this is what been the food, not just our civilization, all over the world, all over the world. It lived for thousands of years, and we have been able to erase it in the last 100 years. And it is India that should reverse the process. And हम और बहुत सारा चीज़ों तो बात करते हैं, how to shit, we have been copying the westerners. मलासन है, बहुत सीधा साधा है, and that is the best way to defill yourself in the morning. So a lot of things are involved, and I didn't talk about vitamin D, सूर्य नमस्कार, बहुत सारा चीज़ है, वो हम other platforms में बात करते हैं. So all these things are together, and we need to worry about individuals to start with, and health is local. So WHO cannot decide and say we will create healthy living systems all over the planet uniformly. That basic fundamental approach is wrong. It is absolutely unscientific. Absolutely unscientific. सर ये स्टेटमेंट WHO तक पहुंचाने की जरूरत है. पहुंचाएगा, it will reach. It will reach. And coming to chas and milk, of course I have mentioned already that this is animal protein, this is non-animal protein, because there is this fermentation process. And it is this fermentation process, it is the microbial world that links the plants and animals. I die, I become carbon dioxide by the means of fermentation. Mineralization it is called. Actually, fermentation process, the end product is mineralization. You end up being minerals. And those minerals are taken up by the plants again, and then you are recycled. This is the cyclic process. Okay. So the tummy, the microbes are building meat from the non-veg material is created by veg material. And what is it doing? This vitamin B12 is actually the sandhi, the bridge, and that is produced by the gut microbes. And that's why I now and then refer to gut microbes is your doctor. You make the doctor sit in your tummy, he will work 24 hours for you, even when you are sleeping. In fact, you get good sleep only when your gut microbes are functioning. In fact, it is the main brain. Actually, this is second fiddle. Even your mental health is dependent on gut microbial health. And it's as simple as that for me. So, animal protein, non-animal protein. Fermentation is the bridge. वही है हमारा गुरु नानक का, लस्सी पी सकते हैं, दूध नहीं पीना है, वेरी सिंपल. एंड हमारा कृष्ण कन्हैया इस मक्खन का चोर है, दूध का चोर नहीं है. नो लाइक दैट आई कैन. हमारे पूरे जो शास्त्र है उसमें तक्र का ही वर्णन है. तक्र देवम देवम दुर्लभम तक्र. अनदर कुकिंग वाला cooking, yeah, cooking. Honey, I don't advise anyone to touch. It's not meant for you. Very simple. And sweet, मीठास, इतना बात किया है, मीठास क्या करेंगे हम? मीठास है toddy palm का, fish tail palm का, coconut, palmaceae. And palm are 18 varieties of palm trees are available on all over the planet. So no one need to even transport the sweet. Even today, with all devastation we have created by making dams and all that, we still have enough palmaceae trees on this planet to provide sweetener for the whole 3 more worlds. That means 3 into 7.3 billions. 21 billion people can be supplied with sweets of palm.
but not your gulab jamun and all that. Okay. वो पंजाबियों ने क्या किया है, और जो आप पनीर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ IIT के इनकी कैंटीन में पक्का बनता होगा शाही पनीर, खिलाते होंगे सब स्टूडेंट अगर। ये पनीर तो वो एक बार हम अबू धाबी नो आई वेंट टू दिस ब्रह्म कुमारी, वो लोग इतना पनीर खाते हैं, इतना शुगर खाते हैं, आई कांट बिलीव, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो हाउ दे सिट एंड मेडिटेट विथ ऑल दैट. कुकिंग वाला है। Yeah, cooking is so simple, very very simple. Just भिगोना है, 8 घंटे भिगोना है. क्या हम पूछ रहे हैं हमको देखते ही बैठ जाओ? 1 मिनट का काम है, पानी में डाल दो, 8 घंटे भूल जाओ. आज कल तो आपके पास स्मार्टफोन है, अलार्म लगाओ, इट्स अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स कुकिंग. हमारा ये खमीर बनता है 5 मिनट में, मिट्टी का बर्तन में 5 मिनट धीरे आग में उबालो, 10 मिनट के बाद एक खादी क्लॉथ उसका ऊपर बांध दो, और 8 घंटे के बाद पी लो. 1 kilo gives you 25 people can take. So Ambali is so cheap. Even if you pay 200 rupees per kilo, 25, 200 divided by 25, and your gehu, you are all thinking you are getting for 50 rupees. It actually costs 4,800 rupees, and you are all paying for it. Each and every fellow who eats gehu is paying 4,800 rupees per kilo. Each and every government is paying 2.89 lakh crores subsidy for these fertilizer companies in each and every country. And you are not calculating in the price of this gehu. And to provide water, each liter, you need minimum of 28 rupees. For wheat, 8,000 liters into 28 rupees, calculate. To build the dam, to maintain, to give water. And if you think underground water you are sucking out and putting the borewell, all that, you calculate in any way you like. To produce 1 kilo rice, you need to give 3,800 rupees. Each and every one of us paying, but the government claims they are giving it free for us. It's our money. So cost wise, cheapest food. There is not a single paisa till today. No one pays any farmer who grows these millets. And I have been working last 20 years in Karnataka. Our Karnataka government is now paying 4,000 rupees per acre, the dryland farmers who grow this. So actually cost wise, this is hands down. I mean, no one can come nearby. As I told you, it is free food. You can have food free. You can have food free for a whole human race, if only we choose millets as our food. And I do not know why we cannot choose millets as, because it is the best food that you can ask for, and God has already given us. It's just choices are made by others, not by us. So I am trying to communicate to everyone, please make the right choice. And cooking is the easiest. We have got a Pakasari book published, PDF is free, and Millet Magic, Dr. Sarala runs a YouTube channel. So I'll take 2 more questions. For students, actually, they can stay back.
students, we have interaction session after this. Okay, so students can एक लाइन जोड़ दूं, ये हमारा कुकरी क्लासेस जो है हमारे पंजाब में comfort level that, as ma'am said, we don't want to spend more than 5 minutes or 10 minutes in kitchen. So I've been approached by a lot of people who are selling or opening startups connected to millets, but it's all fusion. So is it a right thing to promote? Because people ask us, आप लोगों को भूल गए, I have a farm with Anjali Malik, we met across. आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप इसलिए भूल गए, हम अतिथि कहाँ मिले थे? हम मिलते रहते हैं हर जगह. अंजलि मलिक और मैं, हमारा फार्म है. Yeah, it's a good question. I understand. I'm being challenging every now and then. I have 18 तक 3 kids and all their friends are, because I'm an agriculture teacher. आंटी आप तो मिलेट खाते हो, ये मैंगो मिलेट आया है, ये cereals आए हैं. In the name of, they add the word millet. And they sell anything. everything, millets They sell everything, and which is not advice. Well, I think. What is your take on it? How to inspire general? Because they will see a packet, it's written millet, but it's not good for health. It will not cure our disease. That is how I feel. I have a limited knowledge. Not you feel, it is so. So I want to validate it. Yeah, absolutely. It's a good question. How to go about it? Because next year, by the time January 2023 comes, we'll have 100 startups in Delhi, Gurgaon and NCR, more with breakfast options. I know many people, but I can't say on their face, don't do that. You are again bringing a scam in the market. Yeah. This is a pure scam. डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा व्यापक सवाल है. So how to popularize that? Yeah, absolutely. Can I How to answer? popularize that? Yeah, please. Belief. I am a public health man. Okay. The answer is, as you have told, awareness. Yes. See, we do. See, there is this. No, please understand. One minute, I'll tell you. Again, comfort zone. No, listen him out. let us not have close Yeah. discussion. Human behavior, as he has rightly told, you know the number of people died of COVID not by the virus but the fear of the death. The thought of killing is more killing than the killing itself. So what is the thing is, we have to all join and see that clear message of the millet is gone to the public. See, we have become a capital in diabetes. We have become capital in so many nonsense. And we are going to be. It is very, very vital that we have to educate the public. We don't have a choice. Something is better than nothing, but nothing is better than nonsense. I'm sorry. Okay. My question is, someone is getting money to get the startups, and lot of market is created to get them again. The chain will start again. Yes, sir. Yeah, I actually have answered your question in a very subtle way, but I will now explicitly answer the question. It's a beautiful question which I have dwelt a lot of time, and I have been in the thick of things. Okay. 20 years back when I said to eat koda millet in Bangalore, there was no koda millet. So people were awestruck by my lecture. This is 20 years back. There were many doctors, MD, MS doctors, and lot of health Bangalore, big, more than 2,000 people were there in the lecture.
They said, so yeah, it's good, Arka, how do I eat? Where is it? I said, just go to that corner shop, 21 fellows. Ask him, Arka idya. In Kannada we say, do you have Arka? Arka hai aapke paas. Don't even ask to give. After another hour you these 5 grains as Siridhanya. In our language it means the ultimate health, ultimate wealth, and ultimate wealth is health. So that's the connection for that word. So many people, Navadhanya, Siridhanya are not the same. They are 2 different terms. Okay. So when you eat now everywhere in Bangalore, Karnataka, not in Bangalore, all over Karnataka, any town you go, now any village you go, Siridhanya shops are there. In fact, in Bangalore there are more than 100 millet hotels serving millet food only. In fact, millet food only, nothing else. So that kind of transformation has happened in the last 20 years, and it is not enough. I know it's not enough, but then the whole corporate mighty world took 100 years for even in now today in South India we still don't eat wheat. You know that? Now and then people are eating some chapati here and there in the city areas. In our villages we don't even eat upma with we still eat rice upma, not wheat upma. Because that habituation. Yeah, habituation, and this is the answer. This is the answer. So we have come, according to me, a long way in the last 20 years. Now the whole world is talking about millets, and Hamara Pradhan Mantri Sri Narendra Modi in the last 30 days has sputtered out these millet words. Even yesterday in SCO also he mentioned, and he said the security of the human race food depends on millets. Okay. So I understand your concern that they are now mixing. Of course, they are telling mix the millets and eat. Multigrain, dosa, multigrain, palau, multigrain, all this. Okay, but multigrain mixing all these millets does not give you complete health, but it protects you from imbalances. Because the cleaning up of each and every part, and as I told you, we are all sick. No one is healthy, including me, though I am healthier than all the fellows. But now and then when I came out today, they gave me some puri. I thought it was millet puri, but they said after I ate, they have mixed wheat in that. Because if you don't mix wheat, they are not able to make puri. But we have a method, just with millets you can make good puri. It's a matter of your, I actually answered that question, your hands getting. Sir, we should start one millet hotel in Delhi. Chalo, and the last, one more subtle question is, two questions that from the young boys and girls have to be informed. They have to be informed. The information is very important, and we have the responsibility of informing them the right information. And we have no right. We have no right constitutionally, because now they have brainwashed these fellows and say this is what I want to eat, and that's where the buck stops. But then now I have to catch hold of this young lady and brainwash her, rather de-brainwash and feel the right thing. So हम तो एक कागज है, so लिखने का हक हम पे नहीं है, वो boy का, वो girl का है, and that is what is real sovereign way of living. So
all the rights rest with the individual. Our job is to educate. Two questions. Yes. So you mentioned about gut microbes. So just want to take your head and ask you how to protect the gut lining in the microbes. It is the microbes that help you to protect the lining. Many of the diseases, I have listened, like many of the diseases, even 95% of the diseases, even the cancer, it comes if the gut lining gets. Absolutely right. Absolutely right. And with that only we have healed hundreds of cancer patients. So we actually make it a mandatory. You take only Khamir for 9 weeks, and all the protocols that you will get, which is already in the booklet form, which is available free download in Google. It is there in Gujarati, Marathi, Hindi, Telugu, Kannada, Tamil, all languages it is available. And Punjabi is also there, na sir? Yeah, Punjabi is there. Siri Jeevan. So have I answered your question, madam? Though not complete, but that is the only way we. सर इसे एक सेकंड बोल दूं, आप तो कह रहे हैं ना, हम जब मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात शुरू की थी पंजाब में 1996 में, लोग पागल कहते थे, अमेरिकन एजेंट कहते थे. आज ढेर सारी ऑर्गेनिक की दुकानें हैं. हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, तो बिजनेस वाले लोग आएंगे, उनको कैसे करना है वो जो उन्होंने कहा ना, कुछ मिलके बात करनी पड़ेगी. इसे पूरे We will discuss. We can discuss. एक मिनट बस. We'll go one by one. Yes. Mike. Sir, I am Renal. Sir, I am a PhD scholar from Indian Council of Agricultural Research, IIT. Sir, I want to share one news with you. Also, I have a little query regarding that. Sir, recently my startup is incubated in IIT FIT. So I proposed the idea of climate smart agriculture, building a SaaS platform using the remote sensing and satellite imaging technology for the farming community. So while doing my PhD, I figured out that I want to be an entrepreneur rather than taking up a government job, because to bring a massive change through my mindset. So I am very well aware of how important millets are, and these rain-fed crops growing in dryland area, dryland agriculture, how much they are contributing to the problem of climate change. So, sir, now I told you the news, and from 1st of October, my incubation is going to start in the RNL Park. So, sir, it is a very golden opportunity for me to build a very good platform where I can help the farmers who are growing millets, and currently 14 million hectare in India is under millets. All the 9 millets, important millets, and they are so good with their nutritional value, high fiber content and low glycemic index, high glycemic index. Don't use this word low glycemic index, high glycemic. It is a nonsense word. It's actually RTT, renal tolerance test, the slow release of glucose into your blood system, because this glycemic index is a calculated one. They add fiber here and there and then say this black rice has low glycemic index. But when you feed that, you will have glucose running into your systems. So it is slow release of glucose, the most scientific way of deciding what grains work and what grains do not work. This is a corporate gimmick, the glycemic index. So, sir, please, because I want to conduct some pilot studies in the fields of millet farmers. So, would you please help me in conducting those studies? आप बाद में मिलने ना, हो गया, बाद में मिल लो. ये अभी और एक बात और कह दूं पहले, IIR वाले बहुत कुछ सिखाएंगे, वो आपको डीलर अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा घपला वही है. ये मैं उनको बता दूं, क्योंकि अगर वो ठीक दिशा में जा रहे होते, ये संकट ही ना होता, तो हम करेंगे, पूरा करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा. हाँ ठीक. No. See, many of the corporate money is what has created these organizations. So they can do only that much. तो वो तो उतना ही कर सकते हैं. So don't be limited by that. And researchers can wait. Dr. Wali is here. So after the break or after the tea break,
We can interact for at least half an hour. आप पूछ लो नहीं, पूछ लो। आप पूछिए। सर मैं ये कह रही हूँ हम 3-4 साल से मिलेट्स खा रहे हैं, हमने उसे वीडियो देख के मैं आगे बढ़ी, आपको देख के ना मेरे हस्बैंड और मैं बच्चे पसंद नहीं कर रहे घर में। सर ऐसे कह रहे हैं हमारी सारी प्रॉब्लम निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है मुझे तो वो, बट ये है कि ऐसे मैं काफ़ी टाइम से मिलेट्स खा रही हूँ, इसमें 3-4 दिन में जैसे वीट और राइस ले लूँ तो वो बैलेंस हो जाता है या कुछ? नहीं I like her. This is what I said. कि सारा वो थोड़ा शुद्धिकरण कर लिया, बाद में थोड़ा सा वो भी। सर कई बार ऐसा होता है कि बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। No, actually, very interesting. 1 मिनट, आप क्यों टायर्ड हो रहे हैं? सर बच्चे हैं ये नहीं एक सेकंड, जितना हमारा एनर्जी चाहिए उतना हमको न्यूट्रिशन लेना है। यदि आपका आउटपुट और इनपुट बैलेंस नहीं हो रहा है, वो मिलेट की गलती नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। आप जैसे आप हैं, आपको 2400 कैलोरीज खाना है, 2400 कैलोरी सेडेंटरी वुमन, सॉरी मॉडरेटली एक्टिव वुमन, राइट? इतने के लिए कैलोरीज खाना लेना जरूरी है। सर क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि मिलेट से लो। वो तो ठीक है सर। माल देखो, माल का मतलब क्या है? मिलेट, माल। नहीं, she has that kind of understanding, but the problem. Yeah, it's like. सर कहीं बाहर जाते हैं प्रॉब्लम बाहर नहीं खाते, लोगों के घर आना जाना है, मतलब तो थोड़ा खा लेते हैं, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कुछ और भी क्योंकि मैक्सिमम मैं मिलेट्स ही खाती हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ मतलब कि नहीं, फिर भी आप पतले हैं, यू आर वीक। सर ये पतलेपन पे पूछना था, लोग मुझे अगर मैं लोगों को बताती हूँ ना मिलेट्स खाती हूँ, तेरी तरह नहीं बनना, इतना पतला, तेरी पर्सनैलिटी समथिंग कुछ, तो उसके लिए Yeah, I understand your question, and the sincere answer is this, very simple, that if you are eating 95% or even 85% of the time millets, that 15% generating toxic morbid waste can be handled without winking an eye. Now that way I am not asking you to eat 15% rubbish, but then what happens with this is that 15% slowly becomes 20, 25, 30, 40. Then eating millets is of no value for you. So eating millets and gehu and this together is just like pressing the accelerator and the brake at a time. You understand? So up to 15%. And that is the whole stuff, that 85% of the time you are eating this. It's not that rice and wheat are poisons. Rice and wheat are not poisons. That's why we are able to survive. They are generating poisons. So it is in this biochemical processes that cleaning up has to take place. Luckily, we are still eating some sabji, some phal yahan pe wahan pe. So whatever little that fiber which is not that good compared to millet fiber is still able to help you. So now you see the logic is that I am all right. So then what you do, you are falling into the trap of being all right, and that's the problem the whole corporate world has created, because they tell that after taking tablet you are okay na, so you eat and take tablet. That's how they are able to sell their stuff, and the same trick you are going to create for yourself, that they have done all along for 100 years. Now you are going to create, because I told you to get rid of the old habits is tough task for human beings, because we are a conditioned mind. So that is our problem. So to be not conditioned is actually the yoga, the awareness. That means our awareness just slips away moment by moment, and it is to keep yourself aware all times is yoga, and that is possible through the right food and right food only. So eat all the time millets, eat vegetables, eat fruits if you get, but not the fruits that you have in the market. They are all laced with chemicals. So find organic fruits and eat. Yeah, lentils, proteins, half. वो सब काम नहीं करता है. No, that is wrong. Each one is different.
you find your balance. Yeah, only And question. if you believe in God, 2 fistfuls of millets will suffice for you, and half fistful of dicots, pulses, will suffice for you. The ratio is because of the nature's dictum that you can grow 5 to 8 quintals of millets in an acre and 1 or 2 quintals of pulses in nature. So that is the ratio, and that's what I keep telling, don't exceed. I like protein, I like channa, I like rajma, and you fill your plate with sprouts of this, and that's not good for you. In fact, it is high protein that taxes your kidney, and if your kidney is going kaput, your whole system's kaput. So only 2 questions. One you and one. I hope I have answered your Okay. So last question. No, अब तो किचन में शुरू हो रहा है अनारोग्य, because we are choosing the wrong foods. So right food has to come to your kitchen. That's the meaning when I said. When we go for cooking, we take this is oil, cooking oil. So which oil we should prefer actually? या कच्ची घानी ऑयल, हमारा पहले हजारों साल हम भैंस और बैल को वो तेल हम लगाते थे, वो मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, सैफ्लॉवर ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो, एंड आपके लिए इतना ही बस है. You need 3 to 5 spoons of oil every day, not more than that. Not more than that. Sir, I have heard about 2 years back about regarding you from some of my friends actually, bureaucrats in Haryana. He told me about you, and I have studied your book on this Sri Dhanya and made proper diet for my sisters. She was carcinogenic, but she is not there today. She is no more basically. अच्छा कैंसर का था, she is your And I have even purchase this thing on millets for her and give that diet to her, and it was very nice actually, but उसमें मैंने एक मेरा कंफ्यूजन ये था उस टाइम में कि जो आप बता रहे हो कि जो गोल कोयल मतलब जो कोल्ड प्रेस एंड हॉट प्रेस, इसमें No, बैल से निकालने का ऑयल इज सही कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, एंड मशीन से RPM, when you increase the RPM, the definition is you are not maintaining standard temperature and pressure. You can increase one at a time. That's why pressure cooking is also not good for you, because you have both parameters changing. So in rotations per minute, RPM कहते हैं ये machine में, it goes beyond 18 RPM. So when you go beyond 18 RPM, you are increasing the pressure and temperature together. So those oils coming from that kind of machine raised, in fact nowadays they have all kinds of different way of, lot of different methods are there. They have very bad methods of Detailed research questions Yeah. we can take later on. Yeah. This is the last question. मेरे को I know. मेरे को एक व्हाट्सएप आया है, मेरे दोस्त की पत्नी को पहले कैंसर था और वो उन्होंने क्योर करा लिया है मेडिकल सिस्टम से, उसके बाद वो क्या प्रिकॉशन लेंगे? Yeah, millets खा लेना बस. And there are lot of cancer patients who have healed themselves following the protocols. And the protocols, the problem is many people may not have understood completely, though I have tried to make it as simple as possible in the booklet that we have been circulating. And more than 80-85% of people are getting better using the protocols. And we have so many patients that each individual cannot be dealt with a particular doctor, or if not Khadar, someone else. So I thought the information putting out into the public is the best way, and I am actually very glad and happy that thousands of people are getting benefited. Thank you, sir. I know all of us have got a lot of questions. But you see, this class has got people from preparatory to graduate level people. So everyone has got its own query, and those who are just entering in a preparatory class or class 1 like me, so we have to learn a lot, and in one class we cannot have all learning. So sir, 30 years of work. 30 years of work, yes. So but still those who want to interact, especially research scholars, I would advise them to interact after the break,
we have a small tea break. So now I invite Dinesh ji for vote of thanks. विवेक जी ने अपने अधिकार का कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर लिया है और मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाया, लेकिन ये आईआईटी का माहौल है और इस माहौल में मैं भी बोलने से नहीं रुक सकता। अब उन्होंने मुझे माइक दिया है तो कम से कम एक कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। और कहानी इस तरह से है कि एक जंगल था, जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया रहती थी। तो वहाँ से एक ऋषि गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा पेड़ पे इतनी चिड़िया और बैठी हैं और उनके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ कि यदि ये ऐसे ही रहेंगी तो कोई बहेलिया आएगा और जाल बिछाएगा और इनको पकड़ के ले जाएगा। तो इसलिए मुझे इनके ऊपर दया करनी चाहिए, इनको कुछ ज्ञान देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपनी भाषा में उनकी भाषा में उनको सिखाया, बताया कि देखो मैं तुम्हें ज्ञान की बात सुनाता हूँ, तुम लोग इसका पालन करोगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। तो उन्होंने उनको सिखाया कि देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसे खाना नहीं तो पकड़ ले जाएगा। 2 बार उन्होंने दोहराया, उनको बाय हार्ट याद हो गया। तो ऋषि को लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और वो चले गए। चिड़ियों ने भी सोचा कि अरे इतना अच्छा ज्ञान हमें गुरुजी से मिला है तो इसको अपने जीवन में इसका पालन करना चाहिए। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को सिखाया। सुबह उठते ही जैसे ची ची करते हैं तो उनका भी वही कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसे खाना नहीं तो पकड़ ले जाएगा। तो ये उनका रूटीन हो गया। जैसे हम लोग कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन करने के बाद राष्ट्रगान गाते हैं, तो उसी तरह वो भी अपना रात को सोने से पहले दिन भर की गतिविधि करने के बाद फिर एक बार वो अपना राष्ट्रगान गाएं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसे खाना नहीं तो पकड़ ले जाएगा। 4-6 महीने चलता रहा। एक दिन बहेलिया सचमुच आ गया और बहेलिया ने जाल बिछाया, दाना डाला। चिड़ियों ने ऊपर बैठा, खाना खाने से पहले जैसे भोजन मंत्र होता है उन्होंने भी मंत्र गाया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसको खाना नहीं तो पकड़ ले जाएगा। और उसके बाद सभी उतरी, आराम से दाना खाना शुरू किया। बहेलिया ने उनको पकड़ा और लेके चल दिया। समय की बात, उधर से ऋषि आ रहे थे, उनको लगा कि उस पेड़ पे इतनी चिड़िया थी, मैंने उन्हें कुछ सिखाया था, तो एक बार देखता चलूं उनका जीवन कैसा है। तो वो उधर से आ रहे हैं और इधर से बहेलिया खूब सारी चिड़िया लेके जा रहा है और चिड़िया जाल में बैठे बैठे गा रही हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसे खाना नहीं। मतलब ज्ञान मिलने के बाद उसको यदि हमने जीवन में नहीं उतारा तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो मैंने बता दिया, वो बाबा जी हैं, बता दिया, अब लोग फिर भी फंसेंगे जाल में जाके। तो डॉक्टर खादर वली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने समय निकाला और हमें इतनी अच्छी बातें आज बताई। और हमारा दायित्व बनता है कि हम चिड़ियों की तरह केवल रटी रटाई बातों को ना करें, उसे जीवन में उतारें, तो हमारा आज का ये सेशन सफल होगा। इसी के साथ मैं सभी आए हुए अतिथियों का धन्यवाद देता हूं और मंचासीन अतिथियों का धन्यवाद देता हूं और विवेक जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। अभी हम लोग चाय के लिए ब्रेक करेंगे। छात्रों के लिए बाहर व्यवस्था है और आज की व्यवस्था जहाँ तक मुझे पता है वो मिलेट व्यवस्था है। तो और जो हमारे गणमान्य लोग हैं वो अंदर ही रहेंगे, अंदर व्यवस्था है। एक छोटी सी त्रुटि हुई है कार्यक्रम के संचालन में। हम लोग अपनी तरफ से एक हमारे जो जनजाति समाज का एक बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है बैम्बूम, हम लोग चाहते हैं कि वो हम खादर वली जी को वो भेंट स्वरूप दें। मैं प्रोफेसर संतोष सत्या जी से अनुरोध करूंगा
साहब IIT में क्या मिलेट मेला लगाएंगे? हाँ मिलेट ये हमारे झाबुआ का जनजातीय समाज है जो ये प्रोडक्ट बनाता है, इसको बैम्बू एम्पलीफायर के नाम से हम जानते हैं। जी उधर पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। अभी दोबारा आ रहे हैं या खत्म कर दें? 2 मिनट कुछ एडवाइस कर दूं अगर ये आप अलाउ करें सर अब बिल्कुल 2 मिनट के लिए चलो नहीं वो कह रहे हैं नहीं, खादर वाली जी आएंगे। कोई नहीं